Thank you so much. So I would request Bharti and all other members to giving the rosette to Principal Ma'am. Thank you so much. Now I invite Principal Ma'am Professor Neena Vasudeva for formal welcome. Thanks. डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स ने जो ये 7 days वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, इसमें अभी इस वैलेडिक्टरी सेशन में हमारे साथ उपस्थित ऑनलाइन परम आदरणीय नमस्कार सर, नमस्कार डॉक्टर पी के आलूवालिया जी और आप सभी मेरे जो वर्दी यहाँ पे कोलीग्स हैं और प्यारे बच्चों। इनफैक्ट मैं सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स को बधाई दूंगी फॉर सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजिंग दिस 7 days वर्कशॉप। इस तरह का इनिशिएटिव लेना अपने आप में बड़ा एक मुझे लगता है कि चैलेंजिंग काम होता है और ऐसा चैलेंज डॉक्टर अरुण और उनके साथ डॉक्टर सुरजीत और इनफैक्ट पूरे ही डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स ने 1 साल में दूसरी बार लिया। अभी हम बात कर रहे थे कि पहले जो हमारी 7 days वर्कशॉप इन द मंथ ऑफ अप्रैल जो ऑर्गेनाइज हुई थी, उसको वो तो इनफैक्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप थी। उसमें हमारे रिसोर्स पर्सन इनफैक्ट ओपनिंग सेशन में तो हमारे साथ डॉक्टर पी के आलूवालिया जी जो कि प्रेसिडेंट हैं IAPT के, वो एक्चुअली हमारे कॉलेज में आए थे और उन्होंने सबको इंस्पायर किया था, पूरा दिन हमारे साथ रहे थे। बाकी काठमांडू से डॉक्टर राजेंद्र अधिकारी जी, फिर अबू धाबी से रिसर्च स्कॉलर आए थे और इनफैक्ट कुछ और यूनिवर्सिटी से, शायद USA से और भी यूनिवर्सिटी से रिसोर्स पर्सन्स हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े थे। और क्लोजिंग जो हमारा वैलेडिक्टरी सेशन था उसमें भी NIT से हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स हमारे साथ एक्चुअली वो महाविद्यालय में उपस्थित हुए थे। तो एक बहुत बड़ा इन्होंने वर्कशॉप, एक 7 days वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी और 7-8 महीने के अंदर ही एक बार फिर से इन्होंने एक दोबारा इतनी बड़ी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की है। उसके लिए मैं डॉक्टर सुजीत, डॉक्टर अरुण और जो अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं भी हैं, डॉक्टर घनश्याम, डॉक्टर मोनिका, प्रोफेसर शीतल, आप सबका मैं धन्यवाद भी करती हूँ और एक बार फिर से मैं आपको बधाई देती हूँ। इस तरह का इनिशिएटिव लेना अपने आप में एक बड़ा मुश्किल सा काम होता है और इनिशिएटिव ले करके उसको सक्सेसफुली निभाना, मुझे इतने दिनों तक आप सबसे फीडबैक मिलता रहा, स्टूडेंट से भी, मैम से मेरी रोज़ बात होती थी, आपसे भी, राजकुमारी मैम से और टीचर से भी मेरी बात होती रही और इनफैक्ट मैं अपने ऑफिस से भी बीच बीच में ऑनलाइन आप सबको देखती थी और इतना फोकस्ड हो करके आप अगर लेक्चर सेशन है तो लेक्चर सुन रहे होते थे, अगर आपका हैंड्स ऑन सेशन है तो इस तरह से जैसे एक बड़े डिवोटेड स्टूडेंट्स अपने काम में एनग्रोस्ड होते हैं, उस तरह से मैंने आप सबको काम करते हुए देखा। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल पीक एक विंटर्स का ये सीजन था और पूरा 10 से लेकर के 5 बजे तक आप अपने काम में लगे हुए मैंने पाया आप लोगों को। तो
जो ये सक्सेसफुली हमारी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो पाई है, इसमें आप सबकी कंट्रीब्यूशन रिमार्केबल है। मैं इनफैक्ट बहुत ही दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर अमरजीत जी का, जो HP यूनिवर्सिटी से हमारे साथ यहाँ पे रहे, मैम शोभना धीमान जी का, जो पैक से हमारे साथ पूरे 7 के 7 दिन रहे हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा एंड प्रोफेसर याचना शर्मा, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज मंडी से ऑल द 7 डेज स्पेशली ट्रेवल करके यहाँ पे आते रहे, अप डाउन किया आपने ऑल द 7 डेज, और मैं देखती थी कि 10 से 5 बजे तक ये महाविद्यालय में रहे हैं। और इसी तरह से बासा कॉलेज से डॉक्टर गगन सिंह राजपूत और प्रोफेसर राजकुमारी, आपका भी मैम बहुत धन्यवाद। और ऐसा मुझे पता चला कि 3 स्टूडेंट्स HP यूनिवर्सिटी से आए थे। वो कौन से 3 स्टूडेंट्स हैं? अच्छा, अरे वाह वाह वाह। और तीसरा? अच्छा, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली काफी फायदा मिला होगा, इसलिए तो आप यहाँ पे आए, है ना। प्लीज बैठिए। तो आपका भी धन्यवाद। और एक हमारे साथ एक रिसर्च स्कॉलर सूरत से भी थी, वो है अभी कि निकल गया, उनका सर्टिफिकेट पहले साइन कराया था कि शी इज अबाउट टू लीव। तो और जो मेरे अपने कॉलेज के विद्यार्थी हैं, अभी मेरे पास बच्चे सिग्नेचर कराने आए थे, तो मैं उनको कह रही थी कि आप बहुत ही मतलब आप भाग्यशाली बच्चे हो कि आपको कॉलेज में ही इस तरह का एक्सपोजर मिल रहा है। अदरवाइज कॉलेजेस में जहाँ पे भी PG कोर्सेज चल रहे हैं, स्टाफ नहीं है, बाकी आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन उन सारे चैलेंजेस के होते हुए हमारे प्रोफेसर्स ने, मैं फिर से नाम लूंगी, डॉक्टर सुजीत और डॉक्टर अरुण और पूरा ही डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, सारी जो भी मतलब कमियां हैं उन सबको एक तरह से पीछे छोड़ते हुए इस तरह के प्रोग्राम आपके लिए ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और मोरओवर आप लोगों के जो सारे प्रोजेक्ट वर्क भी चलता है, उसकी भी मैंने क्वालिटी देखी, मतलब हैट्स ऑफ टू द स्टूडेंट्स। और आपके जो मेंटर्स हैं, आपके गाइड्स हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी। तो आज हमारा ये सेशन अभी कंप्लीट होता है। इसमें मेरे स्पेशल थैंक्स है डॉक्टर PK आलूवालिया जी, सर धन्यवाद। इनफैक्ट मुझे रोज़ अरुण जी बताते थे कि सर आज 2 घंटे थे हमारे साथ थे, मैम से बात होती थी कि सर तो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें कि ऐसा लगता है कि ये सेशन कभी एंड ही ना हो सेशंस का। और इनफैक्ट बार बार इन्होंने कहा कि हमें लगता है कि और लंबे सेशन होने चाहिए, कि वर्कशॉप भी लंबी होनी चाहिए। 7 डेज में तो मतलब ऐसा लगता है कि अभी और कुछ करने को रह गया है ना। तो सर मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। इनफैक्ट किसी भी फॉर्मल मतलब रिक्वेस्ट के बिना आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। आपका बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। सर में जो ये क्वेस्ट है कि जो इनके पास है वो अपने विद्यार्थियों को दे, दिस इज वंडरफुल, अमेजिंग है ये। और मैं बात कर रही थी कि सर के साथ जुड़ करके सर मेंटर और उनके मेंटी डॉक्टर अरुण ने भी वो सारी क्वालिटीज अपने अंदर इनकलकेट की हैं जो हमने सर में पाई हैं। तो डॉक्टर अरुण में भी एक ये चाहत रहती है कि बच्चों के लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। मैंने पहले दिन भी आपके साथ शेयर किया था कि हमने सबने थोड़ी थोड़ी कोशिश की कि इसको छुट्टियों में बात किया जाए इस प्रोग्राम को, क्योंकि ऐसा लगा कि थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। लेकिन अरुण जी को था कि नहीं मैम, बिफोर वेकेशन हम कराएंगे तो वेकेशंस में स्टूडेंट्स के लिए काम हो जाएगा। तो ये जो स्पिरिट है ये हम सब टीचर्स में तो होती है, लेकिन मतलब ही इज एग्जाम्पलरी। तो इसके लिए अरुण जी मैं आपको सल्यूट करना चाहती हूँ। और जब तक आप जैसे डॉक्टर सुरजीत जैसे और इस तरह के टीचर्स हैं तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है और आगे आप स्टूडेंट्स को लेके जाएंगे। आने वाले दिनों में आई एम श्योर 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में इसी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से कुछ और बड़े बड़े हमारे अचीवर्स निकलेंगे, क्योंकि इस तरह की जब मेंटरशिप मिलती है तो उसका रिजल्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम सामने आता है। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबको बहुत बधाई भी देती हूँ और हमारे साथ 7 दिन तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. I would welcome Professor PK Ahluwalia, who was connected with us virtually throughout this 1 week school on
nanomaterial modeling using SISTA. I would request Professor P.K. Aluwalia to address assemblage present here. Hello, good afternoon. Am I audible? Yes, sir. Okay, very good. So thank you Arun for once again giving me an opportunity to be with you, with the participants of this workshop. And Neena ji, you have set an example through your college for others to follow, that if you have the will, then you have the way. So this is what is the moral of this particular program. My dear students, I'll just share one news item that was there in the Indian Express yesterday. Arun, can you mute it, please? Yes, sir. And that was a very interesting news item actually. And that is why, and in the context of that, actually I see where places like Bilaspur or Mandi or Dharamshala are going to come up in the future. That news item was in the context of the gold which India won here program in China. And the very interesting part of that journey was this, that those people who won medals in that Asia 2023 were coming from villages, small towns, and not from metro cities. So the real strength of India actually lies in rural areas, in small towns, not in metro cities. And holding of this particular workshop, I think, is the beginning of that kind of a confidence which is emerging in our country in those areas which people used to feel are remote. Whenever you talk about Himachal, people say, oh, it's a very remote kind of a place. It is remote geographically, but it is not remote what you call as far as highways of internet are concerned. We are now not lagging any kind of resource in Himachal Pradesh to connect with anybody in the world with a click of a button. So this is a very wonderful kind of an empowerment which has happened in present times. We are living in 21st century, and this empowerment means that even if you are sitting in a village, you can imagine doing those tasks which nobody would have imagined, say, even 5 years back. So, dear students, you are very fortunate that you have such academic leaders available in your institute, that they are ready to go an extra mile to help you. And let me tell you, this is something which is worth emulating. This story actually of this program should go out of Bilaspur, out of Himachal, out of India internationally. Whenever new things are to be initiated, you will find that there is one possibility is that you go for a formal course for that. And you are doing that MSc program or BSc program, or you are in the research program. But every time when you are thinking of doing at the frontiers, sometimes formal learning may not be available in the classroom. And this mode of reaching out through internet is a way of extending the classroom beyond your classroom itself. I mean, today I am not sitting out of your classroom, I am right in your classroom, feeling everything which is happening here.
there, part of the enthusiasm which is there, and see, you have many interesting interactions which you are going to carry with you and feel that yes, we can do it. You know, that kind of a message comes from you. Yes, we can do it. So that capital Y वाला है ना, yes, वो अंदर से निकल के आता है. और आपके साथ अरुण थे, प्रोफेसर अमरजीत थे, सुरजीत जी थे, और देखिए मैं ये मानता हूँ, अगर आपको कोई भी काम करना है ना, तो you always require a woman power. Without that, things never happen. And you know, your principal filled the gap. Neena ji really didn't say no. ऐसे नहीं हो सकता, ये कैसे होगा? You know, sometimes people who are sitting on the chair of administration, they always try to see negative aspect of it. But she saw a very positive part of it. Student. And still, there is small thing. And when somebody comes and says, no, it's there, it's right. Things happening in this very great achievement for the college and for the council. So please accept my heartfelt congratulations. एक्सक्यूज सर वीडियो ऑफ करना क्योंकि बीच में साउंड नहीं आ रही है. With okay. So you have started your day. Am I it okay? हाँ जी सर, आ रही है आवाज. सर आ रही है आवाज. आ रही है आवाज? हाँ जी सर. Okay, so I was telling you that you please take these kinds of positive things with you, which are very, very very much the life lessons, of this particular school. Apart from this, let me tell you, the kind of tools which you have learned, they are such that you are right into the mold of doing research. Our national education policy has been emphasizing this thing that we should have research at the undergraduate level. We should have research at the postgraduate level. We should have creative learners. We should have computationally enlightened learners. We should have innovative learners. And above all, we should have learners who know how to learn. This is a very important part. I have studied my BSc, I have studied my MSc, but if I have not learned how to learn, because life is not going to end with your MSc. Actually, life is going to begin with that. And beginning of life means that now there will be no fixed syllabus, there will be no fixed examination, there will be daily an exam. Even when you are going through the exam, you will not know that you are going through an examination. Question paper will be such that you will not know that question paper is being put before me, but you will have to face it. And the best way to equip yourself for that is nothing but what? That you become lifelong learners. And the kind of internet tools which are available to us today, I think you have just prepared yourself for that.
I would like to request one thing more to the principal ma'am. That ma'am, with very small investments, you can always convert your postgraduate departments into research departments. Time has come that we should start looking at that. You must have been applying from PM Usha program also. I think in that kind of possibility, you should think for each of the department how they can be as good as any university department. There is not something very special in university departments, you know. The only thing is, sometimes people feel that teachers there are more motivated towards research, but I don't see any reason why our faculty is sitting in the departments like Bilaspur College cannot do that. अभी मैं पीछे ट्रैवल कर रहा था और मुझे आने का मौका मिला, ये जो आपका एम्स है उसके पास से गुजरने का मौका, और मैं विजुअलाइज कर रहा था, मुझे एक पिक्चर बन रही थी मेरे आंखों के सामने. ये बिलासपुर इज अ वेरी चेंज प्लेस नाउ, इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट प्लेस. ये तो हब बनने वाला है, एजुकेशनल हब, और वो भी उस लेवल का जिसकी शायद हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बिलासपुर इस स्थिति में पहुंचे. सो यू हैव टेकन ए बिग लीप एंड आई थिंक Government College Bilaspur cannot afford to miss the opportunities which are going to come their way through Prime Minister's Usha program. और मैं तो कहता हूँ, अगर आपके पास मैम डेडिकेटेडली 10 लाख रुपए का बजट हो, तो इस किस्म की रिसर्च करने के लिए आप एक बहुत अच्छी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लैब एस्टेब्लिश करने के लिए सक्षम, और वो सिर्फ आप ही की मदद नहीं करेगी, वो आपके बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी. मैं अरुण से बात कर रहा था कि अरुण अब हमको क्या करना चाहिए कि आपके विद्यार्थी ने जो है इन्होंने सियस्ता सीख लिया, हम ना सिस्टमेटिकली प्रत्येक एक बच्चे को एक एक प्रॉब्लम दे दें और उस प्रॉब्लम को हम डीएफटी के थ्रू सॉल्व करते हैं, और हम एक किताब लिखने की बात सोचते हैं. लेट अस ट्राई टू राइट डाउन ए बुक. जो किताब हम क्लासरूम या क्लासरूम से बाहर हम इस्तेमाल कर सकें टू लर्न द टूल्स व्हिच आर द टूल्स ऑफ फ्यूचर. आजकल मशीन लर्निंग की बात हो रही है. अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो मटीरियल साइंस में लोग स्विच ओवर कर रहे हैं मशीन लर्निंग के लिए, और जो यंग बच्चे होते हैं वो ये चीजें बहुत फास्ट सीखते हैं. ये जो बच्चे जिन्होंने इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया है, इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, इनका लर्निंग कर्व बहुत बढ़िया होता है, बहुत फास्ट होता है, स्टीप राइज होती है. ये मेरे जैसे जो लोग अब सफेद बालों वाले हो जाते हैं ना, उनका लर्निंग कर्व जरा थोड़ा स्लो होता है, और आपका जो लर्निंग कर्व है वो बहुत स्टीप है, और आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो. लर्न लर्न एंड लर्न. आजकल बल्कि एक और मैसेज आता है, आप लर्न करो, फिर अनलर्न करो, और फिर रीलर्न करो. आप देखोगे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही हैं, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग चेंज हो रही है, सब्जेक्ट कई फास्ट बदल रहे हैं. तो अगर आपको उसके साथ रहना है तो आपको इस लर्न, अनलर्न और रीलर्न के मोड में आना पड़ेगा. ये 3 मोड हैं. जैसे आपकी गाड़ी में होता है ना एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच, ऐसे ही आपको अब एक्सेलरेटर मींस लर्न करा, ब्रेक का मतलब है आपने अर्न करा, और फिर उसके बाद आपने एक बार फिर क्लच के थ्रू जो है आपने दोबारा से लर्निंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर. ये छोटे छोटे टिप्स हैं, मैं आपको बताऊं, कहीं लिख के रख लो कि मुझे ये करना है. अपना एक प्लान बनाओ, हर दिन का प्लान बनाओ, हर मिनट का प्लान बनाओ. मेंटेन ए जर्नल. आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड अबाउट दैट कांसेप्ट और नॉट. आप एक अपनी डायरी बनाइए, आप दिन भर में जो कुछ करते हो उसमें रिकॉर्ड कीजिए, और एंड में किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है. अपने आप से पूछिए
कि आज मैंने अपने दिन के साथ क्या किया। देखो एक बड़ी मजेदार बात है, भगवान हमको ना रोज 24 घंटे देता है। वो 24 घंटे भगवान ऐसे देता है, ये बोलता है ये तुम्हारे 24 घंटे, जो इसके साथ आपने करना है करो। अगले दिन जब वो 24 घंटे देने लगता है तो ये पूछता भी नहीं है कि तुमने पिछले 24 घंटों के साथ क्या किया, तुमने उसको वेस्ट किया, जाने दिया, कुछ नहीं करा। इज सो काइंड। फिर आपकी झोली जो है वो 24 घंटों से भर देती, और कभी भी वो ऐसा नहीं करेगा कि भाई इसने पिछले कल 2 घंटे खराब किए थे, इसलिए अगले दिन के 24 घंटों में से मैं 2 घंटे काट लेता हूं और इसको 22 घंटे देता। ऐसा कभी नहीं होता। तो अगर आप इन बातों को थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना और सोचोगे, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। देखिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या कर रहे हैं लोग, थोड़े क्लेवर बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट्स जो है ना वो पढ़ना नहीं चाह रहे, और उनको मालूम नहीं है कि बिना इन सब्जेक्ट्स के हम जिस तरक्की के रास्ते पे चलना चाहते हैं वहां नहीं चल सकते। ये हमारी जरूरत है, इस जरूरत के बिना हम आगे नहीं बढ़े। और जैसे एशियाड में रूरल एरियाज के बच्चों ने, टाउन्स के बच्चों ने मेडल जीते, ऐसे ही फ्यूचर के नोबेल प्राइज जो है ना, जिस क्लासरूम में आप बैठे हो वहां से निकलने वाले। ये आपको सच में मानना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और देखो आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, और आपके जो अरुण है ना टीचर, वो बहुत अच्छे लर्नर भी हैं आप। और बड़ी मजेदार बात यह है कि मैम के साथ मिलके, सुरजीत जी के साथ मिलकर के उन्होंने एक फैसिलिटी क्रिएट कर दी लैब की। ऐसी लैब फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी नहीं है शिमला में, मैं आपको सच बता रहा हूं। वो फैसिलिटी क्रिएट बदलाव की पहचान है, जिसको हम कहते हैं ना बदलाव, वो बदलाव की पहचान। तो मेरा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, जो मेरे मन में भाव आ रहे तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन लेक्चर्स में आप साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह नहीं बैठे, आपने कंप्यूटर के पास आकर के कॉन्फिडेंस के साथ उससे सवाल जवाब करने की कोशिश की। और ये सवाल जवाब होने चाहिए। जब हमें कुछ नहीं पता लगता है तो हमको सवाल करने चाहिए। आपने देखा कि प्रोफेसर अमर जी जो बहुत अनुभवी हैं, उनके मन में कैसे कैसे सवाल आते हैं और एकदम से खड़े होकर के वो पूछने लगता। ये चीजें सीखने वाली। आप अपने मन से एक बात निकाल देना, हम गांधी के देश में रहते हैं। गांधी जी ने पता है क्या किया? सबसे बड़ी बात, हमारे मन से भय निकालने की कोशिश की, डर निकालने की कोशिश की। हमको डरने की जरूरत नहीं है किसी से। और मैं जब ये कह रहा हूं डरने की जरूरत नहीं है, तो हम जिसको कहते हैं ना गुड सिटीजन बनना चाहते हैं। और मैं तो कंटेक्स्ट देखता हूं कॉलेज का। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप कॉलेज के भी गुड इंस्टीट्यूशनल सिटीजन होने चाहिए। वो है आपकी लर्निंग के रिफ्लेक्शन, वो है आपकी एजुकेशन के रिफ्लेक्शन। और कैसे हम मेंटेन करेंगे, कैसे हम सेल्फ प्रोपेल्ड होंगे इस किस्म के प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाना। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, बच्चों ने निर्णय लिया कि हम अपना खाना खुद तय करेंगे कैसे करना है। कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं थी। सबने सोचा रोज पिकनिक मनानी है तो कुछ तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो चलो हम मिल करके कर लेते हैं। कॉलेज में बढ़िया कैंटीन है, कैंटीन वाले को बोला भाई हमें ये इतने बजे चाय चाहिए, इतने बजे हमको लंच चाहिए, और हमें वो भी मिलता रहा। और क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में आने में ना आपको जो मेंटल मसल्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं। फिजिकल मसल्स की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मेंटल मसल्स की बात कर रहा हूँ। वो मेंटल मसल में 2 चीजें जरूरी होती हैं, एक तो आप इंतजार और दूसरा पेट में भोजन। वो होता है ना भूखे भक्ति हो जाए गोपाला, वो चीज जो है वो होनी चाहिए। तो आपने बहुत हंस खेल करके मस्ती से यहाँ पे पढ़ाई करी, उसके लिए आपका अभिनंदन। और मेरे पास शब्द कम है,
अगर आप ये स्पिरिट फ्यूचर में मेंटेन करेंगे तो हो सकता है अरुण को पता लगे कि मेरा स्टूडेंट जो था उसको भंडार अवार्ड मिला, मेरा स्टूडेंट था उसको इन्फोसिस अवार्ड मिला, मेरा स्टूडेंट था जिसको नोबेल प्राइज। ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये असंभव चीजें नहीं, ये इम्पॉसिबल चीजें नहीं, ये मान के चलिएगा। एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रिंसिपल मैम का, सुजीत जी का, अरुण जी का, और हमारे बहुत अच्छे मित्र सहयोगी प्रोफेसर अमरजीत जी का, सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों का, और जैसे हमारे कुलीग्स थे, मंडी से आए, बासा से आए गगन, ये राजकुमारी जी, मैम जिमान फ्रॉम चंडीगढ़, ऑल द वे शी केम हियर। तो ये बड़ा सुखद अनुभव है, और मैं तो कहता हूँ हर 6 महीने के बाद आपको ऐसे सुखद अनुभव मिलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. I invite any participants to come up on the stage and give feedback related to this 1-week school on nanomaterial modeling using system. Sir, you can use video mode also. आ जाइए कोई। Greetings everyone. Hearty thank you to the college. Thank you for organizing this event, and especially Dr. Arun sir, and for clearing all our doubts, and it was really helpful. And Professor P.K. Aluwalia sir, thank you. The theoretical formulation, you explained it very well. Thank you for that. And especially the organizing committee, the accommodation committee, and all. Thank you very much. Thank you. Thank you. थोड़ा सा इस तरफ ना हाँ Respected principal ma'am, respected vice principal sir, and Dr. Sujit and Professor Aluwalia sir. So Dr. Sujit, head of the Department of Physics Department, Dr. Arun, and my dear colleagues and my dear students, good afternoon to all. First of all, I thank the organizers for giving me the opportunity to attend this workshop. So I would also thank Dr. Aluwalia sir for explaining the DFT in such a wonderful way, from the scratch of DFT2 with the daily life examples. Really thank you sir very much for this. And also I would like to thank the organizing committee for giving for making my stay comfortable here in this Bilaspur. So also I'm thankful to all the organizers, the way they are coordinated, and you can say also I would like to thank Dr. Arun for organizing such a wonderful workshop within nominal sources. So in the future, I would like, Arun will again do such type of the workshop,
And now I also did my PhD work with Shasta, but I forget all the things. Now I revise all the things again. So in future, whenever Arun will do such type of the workshop, I would definitely try to send my students to learn this type of the thing. Okay, thank you to all and good luck. Respected Principal Ma'am and Vice Principal Sir and Department Physics से Dr. Surjit जी, Dr. Arun जी and शीतल आज यहाँ नहीं है और Physics Department के जो faculties हैं नहीं, तो first of all I would like to thank them from the bottom of my heart to have this workshop here. And you know, it is not a surprise. I have an association with Arun, Dr. P.K. Ahluwalia sir and Surjit ji for long back. And when I learned that, you know, they are going to have some initiative, so I knew that this is going to be a very quality initiative. And I had to go somewhere, but I just postponed my plan to go somewhere, and I just jumped into it, because when you get a chance to learn something new, when you get a chance something important going on here, so you see this ran in a very different mode, and there was a school feeling when Professor Ahluwalia was giving lectures to us, and he schooled us from the very basics of the DFT. On the other hand, there was a workshop part which Dr. Arun took care, and you see, starting from the installation of the Linux. I haven't seen any workshop where, you know, they train you to this level that you start from installing the Linux on your platform and running the tools there, how now you are going to use them. So this is also a model, I would like to say, that I have attended many schools, workshops and conferences in India and abroad also at every level. And I can say that the quality and the output which has come out from this is not less than any international event kind of I have attended. And this I am speaking from my experience. I have attended the schools and workshops, and kind of learning we have got here, it is not any less. And we have not you know, asked for big funding from any organizations. It happened at the local level, and a school provided, thankfully, your college, provided, thankfully, some fund for this also. And you see that it generated a kind of environment at the beginning of at the cross section of a new year, and when we were in a transition. So I don't think there can be a better new year than we can say Happy New Year. So this is a Happy New Year to all of us and all of you. And now all the students know what to do. You are armed with it. You have a tool what to do. All these are uploaded on the internet also. And when you are solving your problem, you also, when you get into the problem, sometimes you feel troubles and you get stuck. So you also know who to look to, and you can just call and find people that how can I solve my problem. So this is something a very I would say it's a very big event for me, I would say, and I'm very thankful for this association, and I will continue this association and expand this further. So this is a group. Idea is this, that we will expand this group. Dr. Arun has some specialty. I would like to bring in some another specialty next time and collaborate in a group in such a way that I would also like to extend to you what I know and tell you how all students can benefit from it. So my feedback to this is that this events, as Professor Ahluwalia also said, that must continue. And he said one very important thing, that you should learn, unlearn and relearn. And that he said because you see, this is the time of change. Everything around us is changing so fast that within 5 years it becomes an obsolete. What you know today, and after 5 years you say that
this knowledge is obsolete. You have to learn something new. So this is an era. We are living in this era of learning, unlearning, and relearning. We also learn to forget the things which are there in the past, because these are not more any useful. So we have to, when we have to stay advanced, we have to live in this era. We have to live with this motto. And with this, I once again thank for all the wonderful food and all the students here. I very much like the way students here coordinated everything. These students also filled in the gaps wherever it was necessary, and they took it like it was their home event. They were working in their home. So this environment which is present here, I'm very much liking this. And for this, the physics department, our principal ma'am is responsible for this kind of environment, giving this environment here. And I thank you once again. और कोई जो फीडबैक देना चाहता है? Thank you so much. Now I will start certificate ceremony. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रिंसिपल मैम से और सभी टीचर्स से कि सर्टिफिकेट सेरेमनी स्टार्ट करते हैं. अनुपमा चंदेल. नेहा शर्मा. भारती ठाकुर. राजकुमारी. योजना शर्मा. शिवानी शर्मा. मीनाक्षी शर्मा. मिस नेहा.
डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, नाम अगला नाम नीतिका रणपतिया, संजीव ठाकुर, जितेंद्र कुमार, राधिका, अभिषेक चंदेल, शोभना धीमान, चेतरा, रितिका नेगी, प्रियंका देवी, नीरज ठाकुर, रीना कुमारी, शिखा ठाकुर, मोनिका गुप्ता, सराश, रितिका नेगी, विशाल, मनीष पटियाल, याचना शर्मा, बताओ अपना सर्टिफिकेट। मैम का दे दो, मैम ये मैम आपके बात देना, ये शिखा ठाकुर है। कमल देव, दीपू, देवेंद्र कुमार, डॉक्टर अमरजीत सिंह, अमित ठाकुर, अनन्या, समर कपिल,
विशाली, रेखा देवी, सतीश, तारा देवी, गगन राजपूत, अंबिका ठाकुर, निखिल, शिखा, थैंक यू मैम। Thank you so much. Now I invite coordinator of this workshop, Dr. Arun Kumar, for vote of thanks. आज कुछ शब्द नहीं मिल रहे हैं बोलने के लिए। I thank you, Professor Ahluwalia, to be with us from day 1 to means from the beginning of the workshop to this valedictory session. Principal Madam Professor Nina Vasudeva ji, मैंने मैडम को बोला कि मैम मैं वर्कशॉप करना चाहता हूँ, तो बोल रहे थे कि यार अभी एंड ऑफ द सेशन है, कैसे हो पाएगा। तो मैंने बोला पता नहीं होगा कैसे, बट हो जाएगा। साथ में प्रोफेसर कटवाल जी वाइस प्रिंसिपल ये भी बोलते हैं कि नहीं, मोटिवेट करते हैं कोई भी एक्टिविटी वो करने के लिए। प्रोफेसर सुजीत एचओडी फिजिक्स डिपार्टमेंट, कोई भी चीज करनी हो डिपार्टमेंट में, दैट ही इज ऑलवेज विद अस एंड मोटिवेट अस। और डे 1 से जब भी जरूरत होती है, तो ये जब भी इनको रात को फोन करें किसी भी टाइम, देन ही इज ऑलवेज विद अस। ये अनिल जी अमर उजाला से मीडिया पर्सन्स। और अदरवाइज ऐसा होता है कि हम न्यूज़ बना के भेज देते हैं, फिर कवर होती है, तो इतनी ना तो फुर्सत थी, बट इन्होंने अपने आप मीडिया कवरेज की बिना उसके। मैं कई बार इनको बुलाता भी रहा कि आप प्लीज आइए, चाय पे रुकिए या इस पे लंच पे, पर आज भी ऑन रिक्वेस्ट के रुके हुए हैं, अदरवाइज ये फोटो खींच के चले जाते थे वो। मुझे नहीं पता न्यूज़, एक दिन तो मेरे पास आ गई, दूसरे बाद मुझे नहीं पता न्यूज़ कैसे आई, अच्छा भी, बट रेगुलर ये फोटोग्राफ लेके और यहाँ से बच्चों से कंसल्ट करके चले जाते थे और न्यूज़ आ रही थी। मैं फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई थैंक यू, बिकॉज मुझे जनरली ये वाला पार्ट मिसिंग हो जाता है मेरे एंड पे, एक तो फोटोग्राफ वाला और दूसरा न्यूज़ कवरेज वाला।
and Professor Shobna Dhiman, Professor Amarjit ji, मंडी कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स, बासा कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ, ये हमारे साथ है। और खासकर शोभना मैडम का, मतलब मैंने आपको बोला मैम आइए, कुछ ना कुछ मिलेगा सीखने को, तो ये आए यहाँ पे। मैं आई थिंक 2010 में मैडम से मिला था, जब सिएस्टा के ऊपर हमने पहली वर्कशॉप शिमला में की थी। बट उस टाइम हैंड्स ऑन सेशन थे, बट एक ओवरव्यू हमने सिएस्टा का दिया था कि सिएस्टा कैसे काम करते हैं एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज इट कैन डू, थोड़ा हमने करके बताया था। और वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे रिनाउंड प्रोफेसर आए थे। प्रोफेसर हरबोला जी थे, जिनका थ्योरेटिकल फिजिक्स में खासकर फंक्शनल्स को डेवलप करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोफेसर जीपी दास जी थे, प्रोफेसर कपरी जी से बड़े लास्ट लेवल पे वो वर्कशॉप हमने शिमला में की थी। और उस टाइम पहली बार वर्कशॉप में मुझे बोलने का मौका मिला था। मैं उस टाइम जॉब में लग गया था, जस्ट लगा ही था, तो सर बोल रहे थे, मैंने सर को बोला, सर आप कैसे आगे बोलेंगे प्रेजेंटेशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू समवन टू कम ऑन द स्टेज एंड इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स के सामने बोलना। उन्होंने बोला यार दोस्त, किया हुआ काम तो हो जाएगा। एंड द प्रेजेंटेशन जो थी, दैट इज प्री एंड पोस्ट प्रोसेसिंग टूल्स फॉर सिएस्टा, 108 स्लाइड्स के आसपास थी उस प्रेजेंटेशन में। और ये जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती हैं आगे आने के लिए। अदरवाइज मैं भी यहीं से लोकल स्कूलों से पढ़ा हूँ, ऐसा कोई बड़ी हाई फाई मेरी एजुकेशन नहीं है, बट धीरे धीरे चीजें आती गई, कॉन्फिडेंस आता गया। जैसे आपको चीजें आती हैं तो आप कर लेते हो। मैं बल्कि पहले दिन मैं भी सोच रहा था, अमरजीत सर से बात करें, मैंने सर वर्कशॉप तो कर दी, अभी प्लानिंग मेरी कुछ नहीं है। एंड हर एक लेक्चर मेरा अनप्लान्ड था, मतलब एक हिसाब से, बट कहीं ना कहीं बैक एंड में एक पिक्चर थी कि मैंने ये चीजें करवानी है। देन बिगिनिंग में आई जस्ट आता था और देन आई कीप ऑन स्टार्टिंग। एक लिंक जैसा बनाने की मैंने अपनी ओर से कोशिश की है हैंड ऑन सेशंस में। और आलू वाले सर ने भी जो डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी जो थी, कैसे हम यूज करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, कैसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद एग्जांपल्स, छोटी छोटी चीजें सर ने बताई। आई थिंक इतनी माइन्यूटली मैंने कभी बीएफटी पे लेक्चर नहीं सुने हैं। और मैं साथ में अपने स्टूडेंट्स का थैंक्स करता हूँ। मतलब हर एक चीज, सर्टिफिकेट राइटिंग हो गया, चाय का अरेंजमेंट है, चाहे लंच का अरेंजमेंट है, या और चीजें करनी है। ये जो 38 नंबर रूम है हमारा, इसको साफ करना है, तो बच्चों ने खुद बोला सर हम इसको इस तरह से साफ कर देंगे। मुझे कोई पता नहीं है ये कैसे चीजें करी, बट टीम मैनेज वेरी वेल। आई थैंक ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। So I thank you. Thank you so much, sir. Now I humbly request everyone to kindly stand up for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you so much. Now I request all of you to take your lunch. Thank you. थैंक यू सर। की बधाई, की बधाई। वेरी गुड।
activity.